अस्सलाम वालेकुम। वॉक एंड टॉक क्रिकेट के साथ तौसीफ़। आज हम बात करेंगे विराट कोहली के ऊपर और विराट कोहली की जो है वो आईपीएल जो करंट चल रही है उसमें उनकी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है और कहाँ पे मसला है। तो किसी एक भाई ने हमारी कहा था कि यार इसके ऊपर एक वीडियो बनाएं, तो हम आ गए। अच्छा, विराट कोहली ने अभी जो है वो जस्ट ओवर 200 रन बनाए हैं 11 इनिंग्स में इस आईपीएल में। और क्या कहते हैं, पहले इनिंग में 40 नॉट आउट था और लास्ट 2 इनिंग्स में आई थिंक 30 एंड 58। सो इफ़ यू टेक क्या कहते हैं दीज 4 आउट in between 8 or 9 innings he's only scored 80-90 runs, and that is where the question marks are over कोहली। अच्छा, अब उसमें इस साल जो है वो कोहली का जो स्ट्राइक रेट है दैट इज़ 111। सो इस कोहली का इंटरनेशनल क्रिकेट में जो स्ट्राइक रेट है T20 में अराउंड 140, और उनका जो है वो स्ट्राइक रेट आईपीएल में अराउंड 130 है। सो दिस इज़ वेरी बिलो पार बाय हिज स्टैंडर्ड्स। ओके, सो why it is so। अच्छा, इसमें 2-3 चीज़ें। एक तो कोहली has batted at 3, he hasn't hardly passed I think 10 overs। In fact, one of the times he've gone past 10 overs is recently when he opened the batting. So when he batted at 3, he's only gone past 10 overs maybe once or twice. So that is one thing, that he's not batting long enough. Secondly, and the most important thing, is the dot balls. So every third ball Kohli is facing as we speak in this IPL is a dot ball. So just more than 30% dot balls is very high for someone of Kohli's caliber. Multiple reasons for that. Obviously, he's been getting in quite early. Top 6 overs में out हो रहे हैं, जा भी रहे हैं, out भी हो रहे हैं, तो उसमें डॉट बॉल्स नेचुरली ज़्यादा होती हैं। तो अब प्रॉब्लम ये है कि एज वी ऑलवेज स्पीक अबाउट कोहलीज टेक्निक दैट ही इज़ अ बॉटम प्लेयर विच इज़ फाइन, बट ही इज़ गॉट अ वेरी गुड रीच। वो गेंद के ऊपर जाके लेट पावर जनरेट करते हैं। अगर मेरी एक वीडियो है, इफ़ यू गेट अ चांस डू वॉच इट, वाइट बॉल कंपैरिजन बिटवीन विराट कोहली एंड बाबर आजम। तो उसमें हमने इनकी टेक्निक्स डिस्कस की हैं कि विराट कोहली क्यों इतने सक्सेसफुल हैं और उनकी टेक्निक में अच्छी बातें क्या हैं। सो एंड ऑब्वियसली people always think that Virat Kohli would be 5th, 6th stump, he will struggle on 5th stump। वहाँ से उनको आउट किया जा सकता है क्योंकि वो लो हैंड्स के साथ खेलते हैं। यूजली जो वाइट बॉल क्रिकेट है, स्पेशली T20s, द ट्रैक्स आर वेरी गुड, तो उनको वो स्ट्रगल नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से। एनीवेज, तो अगर हम इसकी बात करें इस IPL की इन पर्टिकुलर, पीछे वो कॉट बिहाइंड बिटवीन कीपर एंड पॉइंट 4-5 दफ़ा आउट हुए हैं। उसके बाद 2 दफ़ा रन आउट हो गए हैं, 1 दफ़ा बाउंसर पे आउट हो गए हैं, 1 दफ़ा ऑफ स्पिनर के ऊपर एल भी हो गए। सो एंड अभी जो बोल्ड किया था 2 दफ़ा बोल्ड हो गए, तो मोइन अली ने जिस तरह बोल्ड किया था। तो इफ़ वी लुक इनटू, इफ़ वी ब्रेक इट डाउन, सो वी टॉक्ड अबाउट कि यार कोहली जो है वो लो हैंड्स के साथ खेलते हैं और रिस्क के साथ पावर जनरेट करते हैं, तो उनका जो एलिमेंट ऑफ रिस्क है वो कम होता है। सो दैट्स व्हाट आई सेड पॉजिटिव अबाउट हिम। हाउएवर, अब क्या हो रहा है कि उनका जो फ्रंट फुट है, जो बॉडी है, वो बॉल की तरफ उस तरह नहीं जा रही। ठीक है, तो अगर आप हाथ से खेल रहे हैं और आपका पाँव साथ नहीं जा रहा, तो जिस तरह मोइन अली के बाद अभी बोल्ड हुए, वो इट वॉज अ ब्रिलियंट बॉल, बट इफ़ यू लुक एट टेक्निकली थोड़ा सा जो है ना वो उनको लंच आगे करना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया, जिसकी वजह से वो गैप बन गया। सही। तो सिमिलरली वो जो ऑफ स्पिनर थे साउथ अफ्रीकन 18 ईयर ओल्ड, उन्होंने भी एलबी जो किया वो तो शुरू में किया था, लेकिन उसमें भी यही हुआ कि थोड़ा सा जो है ना वो लंच फॉरवर्ड करते तो ही वुड हैव बीन टॉप ऑफ द बॉल। दैट्स वन थिंग। अदर थिंग इज़ लाइक, जो हम बात कर रहे थे कि यार फास्ट बॉलर्स उनको जो है ना वो अगर आगे से बॉल करें चौथे 5वें स्टंप पे स्पेशली, तो कोहली के लो हैंड्स है, तो अगर कुछ भी डिविएट हुआ तो कोहली विल एंड अप आइदर इन गली और पॉइंट दैट रीजन, बिकॉज वहाँ से जो है वो गेंद के बाउंस के ऊपर जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और वही हुआ 2-3 दफ़ा कोहली, बल्कि 3-4 दफ़ा कोहली इस तरह पीछे आउट हो गए। वंस अगेन कोहली प्लेड अपिश, गॉट आउट, कॉट, उसमें चेस कर रहे थे, बट अगेन दैट्स द सेम थिंग कि थोड़ा सा जो उनका वेट ट्रांसफ़र है, आई थिंक कि मे बी ही इज़ टू टेंटेटिव, बट थोड़ा सा उनका जो वेट ट्रांसफ़र है वो बाज़ का सस्पेक्ट हो जाता है। अब लास्ट 2 गेम्स में ही इज़ बैटेड, इज़ ओपन द बैटिंग एंड ही इज़ ट्राइड टू बैट लॉन्ग। तो अब लास्ट 2 अगर हम गेम्स देखें तो एक में उन्होंने 30 किया और 33 बॉल्स पे और
दूसरे में उन्होंने 58 किया है 53 बॉल्स पे। अगर आप इनको ब्रेक डाउन कर लें तो जो उन्होंने 58 किया था 53 बॉल्स के ऊपर, उसमें 30 रन बाउंड्रीज के थे, ठीक है। तो यानी कि आप 7 बॉलों पे जो है उन्होंने 30 रन किए, ठीक है। तो बाकी रह गए 46 बॉल्स, तो 46 बॉल्स पे उन्होंने किए 28, तो दैट्स 18 रन गैप बिटवीन द टू, राइट। सो दैट गिव्स इट अवे कि उन्होंने डॉट बॉल्स दरमियान में काफ़ी सारी खेलनी। तो आई थिंक कि उनके पास आसपास जो हैं बिग हिटर्स हैं, दिनेश कार्तिक हैं और मैक्सवेल हैं, तो ही कैन अफोर्ड टू प्ले अ बिट स्लोअर। इज़ ऑलवेज बीन स्लोअर इन IPL देन ही इज़ बिन इन इंटरनेशनल क्रिकेट। इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका 140 का स्ट्राइक रेट है, IPL में उनका जो है वो ट्रेडिशनली, नॉट दिस ईयर बट इस ईयर से पहले तक 130 का स्ट्राइक रेट है। बट स्टिल दैट्स 111 is not justified for someone of his caliber. So what do you think that एक सवाल ये भी था कि वो क्या करना चाहिए उनको कि वो रन्स करें। अगेन एज ए सेड कि ऑब्वियसली आई थिंक अगर लास्ट 2 गेम्स में भी ही इज़ गॉन पास 10 overs I think twice in 11 games, or 10 games, last 10 games he's gone past 10 overs twice, and that's a worry. I personally think, मेरी opinion ये है कि if he comes down maybe 2 drop or after 6 overs, तो जो फील्ड है थोड़ी सी ओपन होती है, तो उससे ये होगा कि आपकी जो डॉट बॉल्स हैं वो नहीं होंगे क्योंकि फील्ड ओपन होती है। लेकिन उसका ज़्यादा एडवांटेज इसको ये है, कोहली को ये होगा, विराट कोहली को, कि जब ओपन फील्ड है तो सिंगल्स ले रहे हैं, ही इज़ अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, ठीक है। तो टू कट डाउन दो सिंगल्स पीपल विल टेक रिस्क अगेंस्ट हिम, आइदर दे ट्राई टू बॉल समथिंग out of ordinary or they try to sort of get him out in some other way, and that's his boundary opportunity. But I think कि अगर वो पहले 6 overs में उनका जो है ना वो he's playing too many dot balls, which is what is costing RCB to a degree. But technically speaking, I think he plays with low hands, but we all know that he plays with low hands, or that is what made him successful in past as well. So we shouldn't say कि आप टेक्निक चेंज करनी चाहिए। What's happening right now is with low hands, his feet are not moving the same way. So उसमें दो अगर हम इसको tactically देखा जाए तो you can address it 2 ways. I'm talking about fast bowlers obviously. You can stand outside the crease even further so that you don't have to lunge forward to get to the ball. But again I think कि उनका जो फ्रंट फुट है जब वो आगे जा रहे हैं, द बैलेंस इज़ नॉट एज गुड, ही इज़ नॉट लंजिंग एज फॉरवर्ड एज ही यूज्ड टू। मोइन अली वाला डिसमिसल, आई नो इट वाज अ ब्रिलियंट बॉल, बट आई थिंक he could have gone further up so that there wasn't a gap between bat and pad as it was how he got out. तो चलें अब क्या कहते हैं यहाँ पे भी रात हो गई है, तो मैंने कहा कि इसके ऊपर वीडियो बना लूँ। बाकी विराट कोहली क्या कहते हैं जो लास्ट 3 years से टेस्ट फॉर्म है और वनडे फॉर्म है, आई विल प्रॉब्ली ट्राई टू मेक अ वीडियो ईच बिकॉज इट्स सच अ ग्रेट प्लेयर। उनको एक वीडियो में सब कुछ जो है वो क्या कहते हैं, आई थिंक इट वुड बी अनफेयर टू सम इट अप इन वन वीडियो। Just to keep it very very short, like last 3 years जो T20 cricket है, Virat Kohli actually is not playing that bad in last 3 years. If I look at his stats, so his strike rate has been 140 in last 3 years. Average is probably around 30, 34 away and 75 at home. So I don't think he's struggling in T20 cricket for sure. International cricket, this IPL probably he is struggling for multiple reasons. Obviously थोड़ा सा मीडिया का भी प्रेशर आ रहा है, और सेकेंडली ये कि उनको कप्तान से जब हटाया था इंटरनेशनल टीम में तो उसके बाद भी थोड़ा सा, तो मे बी इज़ नॉट इन द बेस्ट फ्रेम ऑफ माइंड। टेक्निकली आई थिंक हिज फ्रंट फुट इज़ नॉट मूविंग एज वेल एज इट यूज्ड टू, एंड टू सॉर्ट इट आउट आई पर्सनली थिंक ही शुड बी batting 2 down, maybe 3 down, so that he can come after 6 overs, so that the dot balls will be cut down. So right now every 3rd ball he's facing is a dot ball. For someone of his caliber, I think that's 30%, 33% dot balls is too high of a percentage. बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का, and we will make a couple of more videos about his test cricket and one day cricket once the IPL is over. Thank you so much for watching. Assalamu alaikum.